Dr. Gyanendra Kumar Sahuji, esteemed faculties, media persons, and dear students, members and office bearers of Utkal Samaj, Harshvardhan ji, Arun ji, my younger brother Kesar Kalpridge, who has the credit of writing 25,000 poems, who holds a world record. So you might confuse that he is a cameraman or something, but he is just a loving and caring brother who is here to support me. And it's my privilege to be here. Utkal University has a rare distinction of associating with 3 presidents of India. Yes, it began its journey in 1943, but Wadi Bihar Campus Foundation was led by Dr. Rajendra Prasad on 1st January 1958, the first president of India. And the campus was inaugurated by second president of India, Dr. S. Sarvapalli Radhakrishnan ji, on 2nd January 1963. And one thing I was expecting from her, that the current president of India, who is 15th in the line, Srimati Draupadi Murmu ji, is alumni of this university. So, a big round of applause for the Utkal University. It's my privilege and honor to be here standing before you on the platform from the Utkal University. And so, second best part or exclusive part is, I am invited as the first speaker of the Golden Jubilee celebration, which is going on, and I am privileged to be here as the first speaker of the Golden Jubilee celebration. And third best part is, when I was sitting with Principal Sir, I just have a glimpse on the list of the principals over here of ULC, and he is 25th principal, means a silver jubilee principal is celebrating Golden Jubilee celebration of ULC. So very remarkable and exclusive things here to say. But as we are here to discuss something very substantial, very important, very vital to the society, so rather wasting time on other things, I'm just coming to the topic. But before coming to the topic, I had a discussion with Sir. I told him what is his expectation from the seminar, and he conveyed his message. But he made a request as well that I should split my lecture in 2 or 3 segments, so that as you all are students of law background, you need a time for the cross questioning of your chief speaker. So I agreed, I will speak for 15-20 minutes, then it will be your chance to grill me, question me, and I will try my best of abilities to convince you. Reason being, what I am saying, I am convinced. That's why after closing my own MBA and BBA college, which I was running in Noida, and I am giving time for this social transformation and for the sake of this progressive utilization theory. So you are going to convince when my answer is satisfactory to you. It doesn't make any difference that, oh, I gave a very good answer. It is not going to create any impact. When you are convinced no answer seems logical, it's rational, then you are going to be convinced, then my job is done. So I am coming to the topic, which is social transformation. The topic itself says that we are at such a juncture that where the things which is going on is no more required. We need some changes, and the changes should not be cosmetic, rather it should be a nucleus change, a drastic change, a paradigm shift from South Pole to North Pole, a paradigm shift. So what will be the paradigm shift? Whenever we talk about the social transformation means making lives comfortable for everyone, inclusive, for everyone, irrespective of caste, color, creed, religion, nationality, whatever, the geo sentiments, the narrow sentiments. No, if we are guided by such sentiments and some people are getting injustice, it means that society is not inclusive. And here I remember
one fine quote of Martin Luther Jr. that is very famous, and as you belong to the legal fraternity, you must have heard that quote. That is, injustice anywhere is a threat to justice everywhere. कहीं अगर अन्याय हो रहा है तो वो कहीं पे भी न्याय के खिलाफ है. So we have gathered here to discuss about some ideas, some new ideas which will be certainly helpful in the social transformation. And what is that idea? The idea is based on a socio-economic philosophy. It's an inclusive, holistic wellness philosophy which comprises every aspect of the society. Whatever strata, whatever aspect of human life you can think of, every problem has been addressed or solution has been given to this philosophy, which is named progressive utilization theory, प्रौत, और हिंदी में भी प्रौत है ये, प्रगतिशील उपयोग तत्व. This socio-economic philosophy is propounded by India's very well-known own thinker, the socio-economic thinker, the Samaj Guru, the great personality who arrives among us, Sri Prabhat Ranjan Sarkar, introduced this philosophy. This philosophy is not against any of the prevailing systems of this philosophies. It's an inclusive one, it's a synthesis, it's not an antithesis. So what Prout says, come to the economic front, because even a person comes from the so-called other backward classes or scheduled caste or scheduled tribe, even they have good money, they are sitting on certain good positions, but they are not getting that respect which a person commands being in the so-called high caste, upper caste. Even a person born in upper caste, he don't have good job, he don't have the money, but he has a ready-made respect for him because he belongs to certain caste. So this is against even the preamble of our constitution. Every drop of hat our politicians shout, बाबा साहब के संविधान का अपमान हो गया. उन्होंने बाबा साहब के संविधान का अपमान किया. And what preamble says? We the people of India. उसके बाद कुछ शब्द लाइन आते हैं, and it talks about justice. Justice what? Justice of social, economic, political. So do we have the social equality or justice? No. As I said, someone from lower caste is on the good post, and you must have gone through the many news articles that a student of a scheduled caste has been compelled for the suicide in IITs, IIMs or big institutions because they are discriminated. It is against the preamble of our constitution, very foundation of the constitution. Economic justice. Is there economic justice? No. That is also not there. Reason being, the Article 38 of the Constitution says that states shall in particular strive to minimize the inequalities and endeavor to eradicate inequalities in income, facilities and status. So, अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रावकथन में प्रियम्बल में जो आता है कि जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, और आर्टिकल 38 जो कहता है उस पे आप देखिए, मनरेगा के अंदर में उड़ीसा में जो वेजेज है वो है 254 रुपए पर डे, 254 rupees a day for मनरेगा लेबर in Odisha. And the top notch, the technocrat or professional of India is earning a salary of 200 crores a year. 254 rupees a day and 200 crores rupees a year.
Where is social or economic justice? Where is Article 38? Is Article 30 is given any honor or respect? No, not at all. Even the politicians or this chronic capitalism which comprises, unfortunately the judiciary part is also comprises in this chronic capitalism. The corporate houses, the bureaucracy, and before that the executive part and the bureaucracy, media and judiciary, all are the part called that they are part of, they have a hidden nexus in crony capitalism. You all are going to be lawyers in near future, someone in 2 years, 3 years, 4 years, as it's an integrated course of 5 years. So you have the liberty of filing a PIL. Just file a PIL. Already so many PILs have been filed in the Supreme Court. And what Supreme Court says? No, this is not the fundamental right, so we can't do anything. It's in the directive principles, so we are helpless. Even Supreme Court is helpless. So where is this justice of social, economic and political? And come to the political, what I am preaching, not preaching but propagating, might be someday government go against me that this person is a threat to our government, or the ideas which based right now the system is running on the based on the ideas. So might be I can put behind the bars. So I don't have the liberty to cast my vote. I don't have any privilege. I can't give vote to either in the state assembly election or the Lok Sabha election. But a person who is behind the bars, who is in the jail, he might have been punishment of 2 years, below 2 years, he can contest the election. So where is political justice? So we are living in, I will not say a utopian world, but we are living in an era or world where we have limited political democracy. And what that limited political democracy is? The limited political democracy is, if you have attained the age of 18 years, you have a power to franchise your vote. You can have your voter IDs, you can go to the vote. It doesn't ask you that you are a literate, illiterate, Brahman, Dalit, Adivasi, Hindu, Musliman, Akara, Pichhora, nothing has to do. Just attain the age of 18 years, you have the voter ID and you can cast your vote. If you are of 18 years, girls, they are legally allowed to marry. If you are of 18 years of age, you can go for your driving license. So all these things which are not very important to our existence of life is given or granted to us. But we are living in a utopian world कि देखो जो सरकार 25 साल से चल रही थी उसको हमने अपने वोट से बदल दिया. This we have a arrogance or a overconfidence कि हमने बदल दिया. But virtually what happens? Virtually the set of bureaucrats changes, the set of ministers changes, but the fundamental things remain same. Hardly any drastic differences between the ruling parties anywhere in the state or the center. I will not give the name because taking name creates problems. Someone thinks that, oh, I am criticizing him, so it means I am from that party, or I have some affiliation from that party. So I never indulge into this party politics or naming anyone. But you can visualize. And just the previous government, which was not able to provide you the job, because I have visited Odisha extensively, or I have different programs on different topics. I have a program on unemployment crisis and solution. So I was going through the data of unemployment of Odisha. To my utter surprise, a land which is so prosperous with the mineral mines, ore, just you can count on your fingertips: bauxite, coal, copper, chromite, dolomite, graphite, limestone, iron ore, manganese, quartz. What you don't have? Odisha has everything. For survival, we need rivers: Baitarani, Brahmani, Mahanadi, Swarnarekha,
Rishikulia, a number of rivers are there. You have skilled and unskilled laborers. 4.8 crore people of Odisha. You have good number of skilled and unskilled laborers. Again, why Odisha is not considered as a prosperous state? In my view, 3 states, those who are most prosperous in India are Odisha, Chhattisgarh and Jharkhand. But they are immensely poverty-ridden and unemployment rate is quite high. As I was saying that I was going through the data of Odisha, IMS data, this is not my data, International Labour Organization, which is a part of United Nations, it says that in 2005, Odisha was on 22nd place in employment generation. And again in 2022, for 17 long years it has been standing on the 22nd place. So which kind of growth is this? If there is development, there should be prosperity, there should be employment, people should get future, youngsters should get, youth should get jobs. For 70 long years, even in 2014's data was amazing. You will not believe me, you will think that Rajesh has got a mic and he can speak anything. 11 lakh students of the youth have been registered with the employment exchange and only 700. I am not forgetting anything. Only 700 got job against the employment exchange registration of 11 lakh people. So, not only in Odisha, every state of the India is passing through these problems of unemployment, poverty. Farmers are not getting right prices of their produces. That's why they are compelled for suicide in Vidarbha, Marathwada, in many places. And they are sitting for long demonstration in Haryana, Punjab border for more than a year. We have seen the on Delhi border in 2020. If they are going to get, or if they are getting what their demands are, why they will come to the roads? And what I was saying that we have a utopian mindset that we can change the government. If youths are not getting job in X government, and your movement has got momentum, you are a bit aggressive, their police has lathi charge on you, put it behind bars, and the party which is in opposition, they come to you and says, हमारी सरकार बनवा दो, ये सब हम सॉल्व कर देंगे. Fair, you voted for them, you replaced the previous government, and what new government is going to do? They are not going to give you the jobs because they don't have the jobs. So what will happen? फिर तुम भी 6 महीने 1 साल के बाद बोलोगे अरे जॉब तो मिल रही है, again you are going for agitation or movement. The same police, वो जो तुम्हारी चुनी हुई सरकार था, ठीक उसी सरकार की पुलिस आके तुम्हारे ऊपर डंडे बरसाती है और तुमको जेल में डालती है. So we have not that kind of educational facilities है. एक problem और क्या है मैं बताऊं तुमको. The problem is we are getting 2, 3, 4 times food. There is a house over our head, a roof is over our head. So we have bikes or cars, we have good clothes. तो हमको लगा यार गरीबी है कहाँ? गरीबी तो है नहीं कहीं पे. अच्छा फिर पेपर और अखबार वाले भी ऐसा माहौल बनाते हैं जैसे लगता है ना कि इस देश में तो एकदम फिर से हम सोने की चिड़िया हो गए. आईफोन्स आए 1-1 लाख 1.5 लाख रुपए के फोन्स, वो फटाफट बिक गए. एसयूवीज खरीदने जाओ तो वहां पे वेटिंग पीरियड चल रहा है. तो फिर आदमी भी सोचता है कि यार ये कैसी गरीबी है जहां एसयूवीज के लिए लाइन लग रही है, वेटिंग पीरियड है, आईफोन्स ऑफ lakhs of rupees are just going out from the market instantly. But this money is just in few hands, just in few hands, and these people are going for all these things. अभी 3 दिन पहले बीबीसी में एक आर्टिकल आया था कि 100 करोड़, बीबीसी हिंदी न्यूज़पेपर जो है, 100 करोड़ भारतीयों के पास में पैसा खर्च करने के लिए नहीं है. और इसको आप कोरिलेट कर सकते हो
जो 81 करोड़ लोगों को नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में फ्री राशन दिया जा रहा है। पिछले साल प्रधानमंत्री जी ने कहा लाल किले से 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकल गए। बहुत खुश हैं, हम आपकी उपलब्धि पे ताली बजाते हैं। बट ये 25 करोड़ जब निकल गए गरीबी रेखा से, तो ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का जो आंकड़ा है वो 81 करोड़ में क्यों रुका हुआ है? वहां से 5 करोड़ कम करो, 10 करोड़ करो, कुछ तो करो वहां से कम। तो वो 81 करोड़ इंटैक्ट है। And here you are claiming that we have uplifted 25 crore people from the poverty, below or above poverty line. एजुकेशन में भी आप देख लेना, सर्च कर लेना कि कितने ड्रॉप आउट्स हैं, कि 5th क्लास के बाद कितने बच्चे पढ़ना छोड़ देते हैं, 10th के बाद कितने छोड़ देते हैं, बिफोर ग्रेजुएशन कितने छोड़ देते हैं। और एक जो इसका और वर्स्ट पार्ट है कि आप 18 साल के हो गए, आपको वोट देने का अधिकार मिल गया, but if you have a PhD degree, if you have a BTech degree, MBA degree, there is no guarantee that you are going to get a job. And you can't pressurize your government or even the courts that being a PhD holder, being a postgraduate, being a BTech holder, MBA degree holder, I am not getting a job. Court will say, no, I can't help it. It's not your fundamental right. हो सकता है ये भी कह दे कि भाई जब तुझे पता है इस देश में नौकरी नहीं है तो तू पढ़ क्यों रहा था? ठीक है? So this is the scenario. और किसी भी सोसाइटी का सोशल ट्रांसफॉर्मेशन तब तक नहीं हो सकता है जब तक कि उनके एजुकेशनल और इकोनॉमिक जो है उनका एम्पावरमेंट हो। If a society is educationally and economically empowered, then that society has the real transformation. So before moving ahead, as sir has suggested that you should get a chance to question me, counter question, और वो legal भाषा में क्या कहते हैं? हाँ, cross examination. So you have an opportunity of cross examination based on what I said right now. Anyone can raise his or her hand and ask the question. If we have any cordless mic, that will be better one. ULC is the finest institution in terms of legal fraternity, that you people are the best. And best has no question, it means I am the best speaker. मैंने इतना अच्छा बोला कि आप लोगों का सवाल ही नहीं है। अगर मैं थोड़ा सा भी खराब बोलता तो कुछ तो निकल गया था। You have an opportunity of cross examination. And if not, so I will move ahead. Ask questions. Yeah, please. Your question is very easy. Answering a question is too difficult. So you are in easy parts. Ask any question. Not any questions. Regarding Just based on the syllabus. सर फंसा रहे हैं मुझे। Okay, think of it, just ask. Discuss and ask. नहीं, कोर्ट में ऐसा डिस्कस करने का नहीं मिलता है, फिर टाइम मिलेगा काउंटर एफिडेविट डालने का, वो फिर बाद में। So, shall I move ahead? No, sir, I have a question. Yeah, please. I have a question. हाँ, So today's topic is a new paradigm. a new role of paradigm of social transformation. So paradigm shift means it is a totally shift from one angle to another angle. That is why can we go for social transformation from one angle to another angle without facing transition between? And in that transition phase, what should we need to do? Thank you very much. Even you have paved the way for the second part, which I was supposed to go, but you have given me a clue or the baton to move ahead. Why I discussed all the things? Because more or less somewhere you are aware with all these things that some problems are going with the society. But my idea was
just a glimpse of the problems in a broader way with different perspectives, different data, so that you should feel that, oh, society is not that good, signing and this growing shopping malls are not the real truth. This running top-notch SUVs are not the right thing. The reality. There are bitter realities, bitter truths. So it's a social transformation always has a period of transition. No movement, no revolution can take place without a transitional phase. In 1757, we have the Battle of Plassey, when Britishers won, and it was clear-cut that they are going to rule India. They ruled for almost 200 years, 1757 and 190 years. It took 1857, 100 years for first freedom struggle. And after first freedom struggle, it took 90 years to get independence. So there always a transitional phase. You must have read the French Revolution, which happened from 1789 to 1919, or 1789 to 1919. Yes, 10 years, 89 to 1919. But there was a phase of Renaissance, which was led by the intellectuals and academicians. So there will always remain a transitional phase. Only tsunami, earthquake can change overnight. Things can be changed overnight. If there is a tsunami, things will be changed drastically overnight or within hours. If there is earthquake, within minutes, everything can be changed. But for a real social transformation, it needs some time, and that's why leaving my good earning institution, I am moving across India, not only in India but abroad also, to propagate the theory which is namely progressive utilization theory, Pragatishil Upyog Tattva, propounded by Sri Prabhat Ranjan Sarkar, and what Proud philosophy says. How this social transformation will take place. It's easy to criticize anyone. It's easy to say negative words for any of the system. कि पूंजीवादी व्यवस्था बहुत खराब है, ठीक है? It's easy. But what is the solution? If you don't have the solution, so just criticizing means criticism for the sake of criticism. Next slide. This progressive utilization theory is in 16 sutras, in Sanskrit sutras, and I will not go to every sutras, but I will rather go to another dimension of the Proud, which is economic democracy. As I talked about, we have the political democracy. So, and Proud advocates about the economic democracy. And what the economic democracy is, or what are the principles of economic democracy? Economic democracy has 4 principles. First is guaranteed minimum requirements. न्यूनतम आवश्यकताओं की गारंटी होनी चाहिए. और आज के दिन में अगर हम न्यूनतम आवश्यकताओं की बात करें, मिनिमम रिक्वायरमेंट्स की, तो फॉर अ ह्यूमन बीइंग सर्वाइवल 5 थिंग्स आर मैंडेटरी. व्हाट आर दोस 5 थिंग्स? दीस 5 थिंग्स आर जस्ट फॉर बिगिनिंग. जैसे बच्चे को हम सिखाते हैं ना, ए फॉर एप्पल, तो ये जस्ट बिगिनिंग है. दिस इज नॉट द एंड. तो उसके अंदर में फूड, क्लोथिंग, medical facilities, education and the housing. This should be given to each and every individual, not 5 crore people of Odisha, but the 140 or 145 crore people of India or 800 crore people of globe. मैं अभी उड़ीसा में बहुत घूमा हूँ, गंजाम के भी, सर गंजाम जिले से आते हैं, इनका जो एंसेस्ट्रल है वो गंजाम है, तो मैं उसके हिंटरलैंड में गया था. Still people don't have the clothes. Forget about the male persons, even females don't have that kind of clothes that they can अपने शरीर को बहुत अच्छे से ढक सके. मैंने कहा ना, प्रॉब्लम उस माइंडसेट में है कि अगर हमें कोई परेशानी नहीं है तो इट मींस दुनिया में सब बढ़िया है. ये नहीं है ऐसा. तो फूड चाहिए सर्वाइवल के लिए, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग. कपड़े चाहिए, एजुकेशन चाहिए. एजुकेशन empowers us, not necessarily to get the job only. अगर आप पढ़े लिखे हो, आप शिक्षित हो,
No one can exploit you in the name of, there will be no economic exploitation, there will be no psychic exploitation, there will be no exploitation in the name of society, caste or the religious exploitation. How we can judge that we are going to be exploited? अगर हम पढ़े लिखे नहीं है तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारा शोषण हो रहा है. So education is equally important for our mental liberation, not only for the sake of getting job. So this second thing. Third is definitely we need a house, we need education and the medical facilities. जिस तरह के व्यवस्था में हम जी रहे हैं, जिस तरह से फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल हो रहा है, जिस तरह से एयर और वाटर पॉल्यूटेड होता जा रहा है, उसमें हम चाह के भी अपने आप को स्वस्थ नहीं रख सकते. आप एक छोटा सा एग्जांपल देखो, आइसक्रीम सबको पसंद होगा? नहीं पसंद है किसी को? तो हाँ तो बोलो. हाँ, उसकी एक्सपायरी डेट देखना, उसकी एक्सपायरी डेट 1 साल की होती है. तो सोचो उसमें कितना केमिकल या प्रिजर्वेटिव डाला होगा कि 1 साल तक वो ठीक रहेगा. तो व्हाट इज दैट केमिकल डूइंग इनसाइड व्हेन इट्स गोइंग इनसाइड टू मी? तो ये जितने भी फास्ट फूड या ये जो प्रिजर्वेटिव फूड्स हैं, उसके अंदर ये प्रिजर्वेटिव्स केमिकल्स डाले हुए हैं, तो वो हमें तो कर रहा है, बीमार कर रहा है ना. और ये जो दो चीजें हैं, एजुकेशन एंड मेडिकल फैसिलिटी, ये इतना महंगा हो गया है. आप बीटेक कराने जाओ बच्चों को, अगर आज प्राइवेट स्कूल कॉलेज में पढ़ा रहे हो, तो मेरा आइडिया ये है कि मिनिमम यू नीड 20 लाख रुपए. 2 से 2.5 लाख रुपए की कॉलेज की फी होती है. आप बाहर उसको फ्लैट में रखें या उस 2 लाख 2.5 लाख वाले कॉलेज के हॉस्टल में रखें, तो हॉस्टल का भी चार्ज 2 लाख के आसपास आ जाता है. एकोमोडेशन, लॉजिंग, फूडिंग एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो 4 इयर्स कोर्स, भाई बच्चा से फी और नहीं देगा ना, लॉजिंग फूडिंग करेगा, घर भी जाएगा, हॉलीडेज में आएगा, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के लिए भी उसको पैसे लगते हैं. तो इट्स 20 लाख अफेयर्स. मेडिकल करने जाओ तो इट्स अबाउट करोड़. और मेडिकल फैसिलिटी इतना महंगा हो गया है कि आदमी को डर रहता है कि पता नहीं कब कौन घर में बीमार हो जाएगा और एक बड़ी बीमारी हो जाएगी, तो पैसा चाहिए. और पूंजीवादी व्यवस्था ने क्या किया है, पैसे की महिमा को इतना बड़ा कर दिया है. इफ यू हैव द मनी, how you have earned, it doesn't have any value, whether it's good manners or the black deeds or whatever, wrong doings, कोई फर्क नहीं है. अगर आपके पास पैसा है तो लोग को लगता है अरे पैसा वाला है, ये बड़ा आदमी है. सो मनी हैज गिवन यू द पावर, और आपके लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल हो जाती हैं कि बीमार हो गए विदेश में जाके इलाज करा सकते हो. बट यहाँ गरीब आदमी को, तो ये जो शिक्षा और चिकित्सा के लिए जो पैसों की जरूरत है, इसने भी भारत के लोगों को करप्ट बनाया है. ये जो भ्रष्टाचार है, उसके पीछे एक ये फियर साइकोसिस है कि अगर पैसा नहीं होगा और मेरे घर में कोई बीमार हो जाएगा या बच्चे को अच्छी शिक्षा देनी है, एजुकेशन देना है, तो पैसा कहां से आएगा? सो दे आर गोइंग फॉर द करप्ट प्रैक्टिसेस. एंड द सोशल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोथ फिलॉसफी इज, in Proud's philosophy, or not the philosophy but in the Proud governance, Proud establishment, education and medical facilities will be completely free, and it will not like that government quality or the present day government quality, but it will be the best quality of the facilities to each and every individual, that a Dana Manji should not carry his wife's corpse on his shoulders for 12 years. शायद आप लोगों को पता नहीं होगा, 15 अगस्त के एक दिन पहले या 2 दिन, एक दिन के बाद की बात है, 14 अगस्त और 16 अगस्त 2016 की घटना है. लेकिन उड़ीसा के ही दाना मांझी, उनकी पत्नी का देहांत हो जाता है. कोई एम्बुलेंस नहीं, कोई एनजीओ नहीं, कोई सरकारी सपोर्ट नहीं, और वो अपने पत्नी के शव को 12 किलोमीटर तक कैरी करके अपने गांव तक लाते हैं. तो ये कैसा हमारा नॉलेज है, ये कैसा हमारी प्रगति है, कैसा डेवलपमेंट हम कर रहे हैं, जहां हमको बेसिक फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी. एंड इफ दिस बेसिक फैसिलिटीज आर गिवन टू अ सर्टेन सेक्ट ऑफ द सोसाइटी, रेस्ट आर poverty ridden, they are not getting basic amenities, then which kind of society is? Are we a sensible society? क्या हम पढ़े लिखे लोग हैं
जो दूसरों के दर्द से हमें कोई दर्द नहीं होता है? सो प्राउड सेज गिव वर्क जॉब टू एवरीवन। अब देश के अंदर प्रॉब्लम क्या है? द मोमेंट यू से रोजगार 100% रोजगार, तो सबको लगता है कि सबको सरकारी नौकरी मिलेगी। नो फिलॉसफी और सिस्टम कैन प्रोवाइड 100% जॉब टू एवरीवन, और बहुत लोग करेंगे भी नहीं। एज आई वाज रनिंग माय ओन बी स्कूल, आई क्लोज्ड इट, आई एम मूविंग अक्रॉस इंडिया एंड ग्लोब, एंड आई एम मोर देन हैप्पी रनिंग दैट इंस्टीट्यूशन एंड गेटिंग करोड्स ऑफ रुपीस। तो बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको सरकारी नौकरी पहले दिन से पसंद नहीं होता, उनको पता होता है कि नहीं मुझे कुछ करना है, अलग से करना है। आईआईटी छोड़ के लोग खेती कर रहे हैं। तो जो 100% रोजगार जो मिलेगा उसके अंदर में ये गारंटी होगी कि वो अपना जो फूड है, क्लोथ है और हाउसिंग है वो खुद अर्न कर सके, और मेडिकल फैसिलिटी एंड एजुकेशन विल बी कंप्लीटली फ्री टू एवरी स्टेटा, एवरी इंडिविजुअल ऑफ द सोसाइटी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट, कलर, क्रीड, रिलीजन और एनी सेक्टोरियल थिंग्स और जियो पॉलिटिक्स, जियो सेंटिमेंट्स। And the second part is increasing purchasing capacity. What is increasing purchasing capacity? You might have economics background के बच्चे तो वो समझ सकते हैं, but probably you haven't came across this purchasing capacity. Purchasing capacity is actually what you are getting money as your salary and what you are able to purchase. That's the exact purchasing capacity. और देखो, जब भी देश के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री जी या अर्थशास्त्री बात करते हैं तो दे वेरी प्राउडली क्लेम दैट वी आर द 5th largest economy of the world. All the time they say, but they never say that on per capita income we are on 141th place. दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, लेकिन वह प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम में 141वें नंबर। No one never says. And actually this per capita income defines our economic condition. अब मैं थोड़ा ज्ञानेंद्र सर का पैसा थोड़ा कम करके बता रहा हूँ। अब मान लो कि ज्ञानेंद्र सर के पास 1 करोड़ रुपए हैं, ठीक है? अच्छा मैंने कम बोला है, चलो 10 करोड़ कर लेते हैं। हाँ, जब मैथ में तो हम मानते ही है ना कि बंदर 3 फीट चढ़ा फिर 2 फीट उतर गया, तो मान लेते हैं कि सर के पास 10 करोड़ रुपए है, ठीक है? और राजेश तो फकीर आदमी है, तो 2 लाख रुपए राजेश के पास है। अब पूंजीवादी व्यवस्था क्या कहती है? सर का 10 करोड़ लिया और मेरा 2 लाख लिया, अब ये हो गए 10 करोड़ 2 लाख रुपए। 2 लोगों का है तो 2 से डिवाइड कर दिया। अब थ्योरेटिकली सर के पास 5 करोड़ 1 लाख रुपया है और 5 करोड़ 1 लाख रुपया मेरे पास भी है। बट प्रैक्टिकली क्या है? सर करोड़पति है, मैं बड़ी मुश्किल से लाखपति हूँ, ठीक है? सो ये जो फ्रॉड कंसेप्ट है ना पर कैपिटा इनकम का, उसको प्रभुत्व के प्रणेता श्री प्रभात रंजन सरकार सिरे से खारिज करते हैं और कहते हैं देयर शुड बी परचेजिंग कैपेसिटी। आप कितनी सैलरी देते हो वो मायने नहीं रखता है, बट आप उसको जो दो उसमें इतनी परचेजिंग कैपेसिटी निहित होनी चाहिए कि उसको अपने बेसिक्स वो परचेज कर सके। और शायद आप लोगों को नहीं होगा या शायद आपने फादर वगैरह से सुना होगा कि हमारे ग्रैंडफादर अगर सरकारी नौकरी में थे तो हार्डली की सैलरी मालूम नहीं होती थी, 100-200 रुपए, और उसमें भी वो बहुत प्राउड बताते थे, पता है पिताजी की सैलरी उस जमाने में 200 रुपए होती थी। क्यों कहते थे 200 रुपए होती थी प्राउडली? क्योंकि उस 200 रुपए में इतनी परचेजिंग कैपेसिटी थी कि हम सब कुछ खरीद सकते थे, जो आज शायद 2 लाख रुपए में भी नहीं हो। तो इसलिए प्रभुत्व के प्रणेता कहते हैं कि इतनी परचेजिंग कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो अपने जो न्यूनतम आवश्यकताएं हैं, मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है, ही और सी कैन बाय देमसेल्फ। अब आप सोच के देखो कि अगर आपके पास काम या रोजगार या नौकरी है, आपके पास उस नौकरी के अंदर इतनी रिम्यूनरेशन या सैलरी या पैसे आ रहे हैं कि आप अपने बेसिक रिक्वायरमेंट्स की 3 चीजें परचेस कर सकते हो, क्लोथ, फूड और हाउसिंग, और 2 चीजें आपको एब्सोल्युटली फ्री मिल रही है। तो आप सोचो कि ये कितना ड्रास्टिक जो है इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन है सोसाइटी का। नो वन हैज टू सफर फॉर अ पीस ऑफ ब्रेड। वर्ल्ड बैंक कहता है कि 30% लोग उड़ीसा में हैं जिनको 2 टाइम खाने को नहीं मिलता।
they are not getting food for 2 times a day. And this is not my data. Everyone has the smartphone. After program you will search it. This is World Bank's data. और भारत में एक माइंडसेट है कि सरकारी आंकड़ा जितना होता है उसमें घालमेल होता है। अगर दुर्घटना हुई और सरकार कहती है 10 लोग मरे हैं, तो हम लोग मान लेते हैं कि 40-50 तो कम से कम मरे ही होंगे। और जब सरकार बहुत अच्छा पिक्चर देती है कि अरे अनएम्प्लॉयमेंट तो खत्म हो गया, मुश्किल से 1% लोग ही अनएम्प्लॉयड बचे, तो भी हम मान लेते हैं कि झूठ बोली है सरकार, 10-15% अभी भी अनएम्प्लॉयड है। ठीक है, तो ये स्थिति है कि आपको 2 टाइम खाने को नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में जब आपको एक इतना बढ़िया, और जब फ्री एजुकेशन होगा तो डेफिनेटली लोग पढ़ेंगे, पढ़ने के लिए जाएंगे, और जब पढ़ेंगे तो उनका एक जो है एजुकेशनल एम्पावरमेंट होगा, और जब उनको इकोनॉमिक फ्रीडम मिलेगी तो उनका इकोनॉमिक एम्पावरमेंट होगा। तो आज ये जो सोसाइटी एजुकेशनल, सोशल, साइकिक, फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन से जूझ रही है, it has a drastic social transformation from nothing to everything, from a dark era to a golden era, बुरे दिन से अच्छे दिन। And what he says कि होगा कैसे, इसका भी एक पूरा मैकेनिज्म है। As today that's not the part of our topic, लेकिन एक प्रश्न रहता है ना, कोई मर्डर होता है तो लीगल फ्रेटर्निटी में पहला क्या होता है, जज का क्या रहता है, व्हाट इज द मोटिव बिहाइंड। भाई अगर किसी ने मारा है तो मारने का उसका मोटिव क्या था, अगर मोटिव एस्टैब्लिश नहीं हो रहा है तो ही गेट्स बेनिफिट ऑफ डाउट। तुम्हारे फील्ड की बात कर रहा हूं, ठीक है। सो मोटिव एस्टैब्लिश, तो ये जो चीजें हैं ना, ये कैसे होंगी उसका भी पूरा एक ब्लूप्रिंट, पूरा मैकेनिज्म है। हाउ